Assalamu alaikum students. So today is our last lecture for international finance, and I guess now you have covered a lot of topics and now you would understand the international finance and the basic and important concepts of international finance in detail. Let's review our whole international finance module and let's see what you have covered in the whole module and in your whole 32 lectures. First of all, the main topics which we have covered are international financial management. Like when you are saying कि आपके पास financial management आपने करनी है in terms of domestic financial management, it is something which you are going to do on the domestic market. For example, you are running a company in the domestic market and you are trying to control or you are trying to manage the functions of that domestic market, functions of the finance terms. So in that case, basically you are trying to deal with the domestic financial management. However, when you are saying international financial management, so that means you are trying to control or you are trying to manage the transactions which are basically dealing with the international financial transactions. Secondly, we will also consider we have also considered the international flow of funds, because when you are saying कि आपने international finance की importance है and when you have considered कि international finance को किस तरह से deal करते हैं, and when you know that there are some main objectives because of which the companies are starting up their business in foreign markets, then you should also know that when you are involving yourself into foreign trade, so there must be involvement of financial transactions in it which are in terms of इंटरनेशनल फाइनेंस, कि वो ट्रांजैक्शंस जो हैं वो आपकी डोमेस्टिक करेंसी में नहीं होंगी बल्कि वो आपकी फॉरेन करेंसी में होंगी. International flow of funds and the balance of payment concept has also been discussed in this module, where we had discussed कि आप अपनी international financial transactions को किस तरह से record कर सकते हैं या आप उनकी record keeping किस तरह से करते हैं. We had discussed so many heads into balance of payment, that these are the heads under which the capital account, the current account, and which type of transactions will be recorded under the category of capital account and which type of transactions will be recorded under the category of current account. We also discussed the importance of financial markets, because when you are talking about the international flow of funds, so you cannot ignore the importance of international financial markets, because if you are running a multinational company and you are having an international business, in that case you should know that for the availability of funds, or if you are having excess of funds, you need to know that what are the international financial markets and how you can either invest your funds or how you can finance your requirements. We will discuss the foreign exchange rates and the types of foreign exchange rates also, in that case where we discussed that what type of foreign exchange are available and what types are available in terms of foreign exchange regimes. We discussed the pegged exchange rates, we have discussed the fixed exchange rate, we discussed the gold standard before that time, and then we moved on towards the managed floating system and the completely freely floating सिस्टम, कि वो तमाम सिस्टम्स क्या थे और उन तमाम सिस्टम्स को या एक्सचेंज रेट रिजीम्स को किस तरह से कंट्रीज ने इम्प्लीमेंट किया है. And again, when we were coming towards the importance of foreign exchange rate types and their exposure for the business, you cannot deny the fact that the importance of government intervention is also there, because जब आपके exchange rates deviate करते हैं from its mean value या from its equilibrium value, to some extent governments, yes, they do allow them to move, but after a certain point it is not in the favor of the country that their exchange rates should go below the extreme points. So in that case the government intervention is important in that regard, और usually government intervene करती हैं और government जो है वो exchange rate को stabilize करने में help करती हैं because of with the help of their policies. Then we also discussed the concept of inflation, exchange rates and interest rate movements. जब आप बात करते हैं inflation rates की, so obviously they do have an impact over the international business. The change in inflation will definitely bring a change in international business. Or when you talk about the exchange rate, so a change in exchange rate movement will definitely bring a change in the in the international business. We also discussed the importance of interest rate movements, because if you are either going for the investment opportunity or you are going for the financing opportunity, the importance of interest rate is cannot be denied, or you cannot ignore the fact that the interest rate are as much important as any other economic factor in case of international business.
जब आपके पास इस टाइप के रिस्क्स इन्वॉल्व हो जाते हैं जिसकी वजह से आपका इंटरनेशनल बिजनेस इफेक्ट हो सकता है, व्हाट यू कैन डू इज यू कैन मैनेज दोज रिस्क्स एंड यू कैन मैनेज दोज मूवमेंट बाय यूजिंग डिफरेंट मेथड्स इन अवेलेबल इन इंटरनेशनल फाइनेंस. Risk management of foreign exchange rates will be was also discussed in our lectures where we discussed कि आपकी अगर exchange rate fluctuations हो रही हैं तो उनको आप किस तरह से manage कर सकते हैं, उनके risk को आप किस तरह से eliminate या reduce कर सकते हैं. Then we also discussed 3 different types of exposure which a country can face or which a multinational company can face in terms of transaction exposure, translation exposure and economic exposure. अब इन तमाम की details क्या है, we have already discussed them in our previous lectures कि आपकी transaction exposure किस तरह से होता है या कोई company economic exposure को किस तरह से face करती है या translation exposure को किस तरह से face करती है. Finally, we discussed the concept of direct foreign investment and the motives that why direct foreign investments are introduced in different companies or in different countries. What are the main objectives or what are the main motives behind them? First of all, we discussed the importance of multinational companies, that why multinational companies are going for further their expansion of their further setups, and that involved that the goals of multinational companies, कि आपके जो multinational companies होते हैं उनके main objectives, motives या goals क्या होते हैं. We discussed the 2 main agendas of the multinational companies where we discussed that the multinational companies want to increase the value of their firm, plus the second agenda is that they want to increase the wealth of the shareholder, because अगर तो multinational company की value increase होगी, so obviously there are attached points that if multinational company is increasing in its value तो उसकी जो prices हैं products की वो भी increase होंगी. जब products की prices increase होंगी so obviously shareholders की जो wealth है वो किस तरह से increase होगी कि उनको dividends ज़्यादा मिलेंगे, plus they will also the value of their shares will be also enhanced, उनको capital gain भी they will achieve. So goals of multinational companies involve that they want to increase the wealth of the shareholders and plus they want to increase the value of their firm. We also discussed the concept of agency problem, which is very much important in this regard, like in terms of international business, कि आप agency problems क्या होते हैं और उनको हमने किस तरह से देखा कि उनको deal करने के लिए क्या standards available हैं. Agency problems we discussed are those problems where we saw that if in case of multinational companies आपके जो subsidiaries के managers हैं उनका point of view या उनका जो opinion है that is different from the parent company's financial manager. If both these managers have different point of view, so there is possibility कि आपके agency problems involve हो जाएंगे in your multinational companies. And the main objective of multinational companies in regard to the agency problem is that they want to reduce agency problem or they completely want to eliminate them. So in this regard, when you want to eliminate the agency problem, there are 2 types of setups introduced by multinational companies. One is called the centralized and the other one is called decentralized setup. सेंट्रलाइज सेटअप में क्या होता है कि आपके पास एक ही मल्टीनेशनल कंपनी का जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है उसके जो फाइनेंस मैनेजर है ही विल बी द फाइनेंस मैनेजर ऑफ ऑल अदर सब्सिडरीज कंपनीज. तो जितनी भी सब्सिडरीज हैं उनके भी जो फाइनेंस मैनेजर होंगे वो सेम ही होंगे. एक ही फाइनेंस मैनेजर सेंट्रलाइज्ड वे में डिसीजन लेगा और तमाम सब्सिडरीज उनको फॉलो करेंगी. हाउएवर इन डिसेंट्रलाइज्ड फंक्शन सिस्टम वी डिस्कस, जिसमें हमने डायग्राम के थ्रू डिस्कस किया कि डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम में क्या होगा कि आप के जो मल्टीनेशनल कंपनीज के जो मैनेजर्स हैं वो डिफरेंट होंगे और हर सब्सिडरी का फाइनेंस मैनेजर डिफरेंट होगा. इन दैट केस ऑब्वियसली देयर इज पॉसिबिलिटी कि डिसेंट्रलाइजेशन की वजह से जो आपका पॉसिबिलिटी है एजेंसी प्रॉब्लम्स की वो अराइज हो जाए. और जहां पर भी एजेंसी प्रॉब्लम अराइज होगी देयर इज एजेंसी कॉस्ट इन्वॉल्व विद दैट, बिकॉज द ऑब्जेक्टिव द पेरेंट कंपनी इज दैट दे वांट टू रिड्यूस एजेंसी प्रॉब्लम्स फॉर व्हिच दे हैव टू पे द कॉस्ट. सो एजेंसी कॉस्ट्स आर दोज कॉस्ट व्हिच आर इनकर्ड for the purpose that the multinational company wants to eliminate the agency problem from their organization.
why companies want to go for internationalization or why do they go for the foreign setups, that involves the theories of international business, which we discussed in detail. Three main theories we have discussed, which do involve the comparative advantage theory कि अगर आपको comparative advantage चाहिए, then you can go for the foreign setup. We also discussed the factor of production. We also discussed the other criteria for which you can go for the international setup or you can launch your international business, because of which the countries or the companies want to go on the foreign markets. The common methods to conduct international business involve that what are the methods available for multinational companies by which they can go for the international business. That can be international trade, which we have discussed कि आप international trade के through foreign transactions कर सकते हैं और international business launch कर सकते हैं. जब आप बात करते हैं international trade की, so it involved the trade of imports and exports of goods and services. That can involve the goods and services, and that can also involve the financial assets. So when you are talking about the international trade, so it can involve the transactions in terms of goods, services or financial assets. When you are talking about the goods and services, so these are the tangible assets, while when you are talking about the financial assets, so we have discussed it in detail that these are the intangible assets. So when you are talking or you are doing business in terms of financial transaction or financial assets, so the market becomes fragile or sensitive. In that case, why? Because आप जब financial transactions में deal करते हैं या financial assets में deal करते हैं, तो उससे related जो transactions होती हैं, उसमें obviously there are chances that if there is small error or there is small agency problem involved in it, so a huge financial crisis can occur. So in terms of international trade, what types of businesses or what types of options are available for international business? That involve international trade. It involves licensing, that आप किसी कंपनी का लाइसेंस ले लें और लाइसेंस के थ्रू आप अपना बिजनेस रन करना शुरू कर दें. Then there is another option which is called the franchising, like for example McDonald है या दूसरी कोई ऐसी चीज़ है जिनकी franchising possible है. So if you want to go into enter or penetrate into the foreign business or into the international business, there is another possibility which is called franchising. We have discussed the factors regarding the franchising, and we have discussed the pros and cons attached to these factors or these methods. And then you can go for the joint venture, where you can join yourself with other business and then you can establish your business in foreign markets. Acquisition can be another option by which you can acquire the existing business in any other market, which is in terms that it is profitable for you, and out of that you can generate heavy revenues or large revenues, and you can establish that setup with reduced costs. Or the final option which is available with you is to set up a new foreign subsidiary in any foreign market. So these are the options available by which you can go for the international business. Investment opportunities or financing opportunities have been discussed in details in our previous lectures कि कितनी आपके पास investment opportunities available हैं, किस तरह से आप investment opportunities को avail कर सकते हैं, interest rate का क्या role हो सकता है इन investment opportunities में या financing opportunities में, आप इन तमाम को किस तरह से avail कर सकते हैं या फिर आप इसमें से इन तमाम opportunities के साथ आप किस तरह से benefit ले सकते हैं. Marginal returns और marginal costs को हमने detail में discuss किया. When we were considering the balance of payment account, then there was a concept of capital account in which there were some subcategories we discussed. That was direct foreign investment, that was portfolio investment, it was capital investment. When you're talking about the direct foreign investment, so that is something that you are trying to acquire an existing business, or you are trying to basically have a new subsidiary in any foreign market. But the main agenda for the direct foreign investment is that you are trying to invest into fixed assets. So जब आप डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो हमने बात की थी कि आप फिक्स्ड एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं और यहाँ पर आपके फॉरेन सब्सिडरीज या तो आप न्यू फॉरेन सब्सिडरीज लॉन्च कर देते हैं या फिर आप किसी एग्जिस्टिंग बिजनेस को एक्वायर कर लेते हैं. सो उसकी तमाम इनकम या जो कैश फ्लो होगी वो आपकी कैपिटल अकाउंट के हेड के अंदर अकाउंट होगी या रिकॉर्ड होगी. पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट इज समथिंग वेयर यू कैन गो फॉर द फाइनेंशियल एसेट एंड दीज आर द लॉन्ग टर्म एसेट वेयर यू कैन सी कि आप फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन या फाइनेंशियल एसेट्स में किस तरह से ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या है. कैपिटल इन्वेस्टमेंट हमने डिस्कस किया कि दैट इज द शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट एंड इट इज मोर लाइक द पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट. द ओनली डिफरेंस इज दैट वन इज शॉर्ट टर्म एंड वन इज लॉन्ग टर्म. हाउएवर बोथ ऑफ देम डील इनटू द फाइनेंशियल
एसेट्स, तो फाइनेंशियल एसेट्स में आप डील करते हुए या डिस्कस करते हुए या अपने ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हुए कैपिटल अकाउंट की सब कैटेगरी में रिकॉर्ड कर सकते हैं। Trade volume was discussed that different countries have different trade volume, but the whole world is moving towards the development and they are liberalizing their borders, whether it is in terms of goods and services, whether it is trade openness in physical terms, or whether it is the transaction in terms of financial assets. तो अब वो countries जो कि पहले reluctant थे in terms of financial transactions या financial assets में transactions करने के लिए reluctant थे, now almost all the countries have developed their products or have developed their strategies that they are opening up their borders for goods and services and also for the financial assets. तो चाहे आप tangible products में बात करें या आप intangible products में या assets में investments की बात करें, all over the world is developing. We also discussed that if there are trade opportunities available in the world and if the world is liberalizing for its international financial transactions and international finance, then again there is possibility that there can be trade agreements and trade disagreements also. When you discussed the trade agreements, so we considered the part where we discussed there are certain countries or certain regions who are facilitating the international trade or international business. Considering the NAFTA, which is focusing upon the Latin American countries, and also considering the GATT where more than 100 countries are dealing with them and they are basically trying to having a contract for the 100 plus countries and they are facilitating them in their international business transactions and international financial transactions. Considering the EU or the European Union is the union which is being formed by the European countries और European countries ने एक group बना के basically jointly एक form की है union through which they are trying to facilitate European countries. Earlier there were 12 countries who joined the European Union and then they introduced a single currency, euro, by using which they are trying to avoid the exchange rate movement. So all these objectives were in terms of trade agreements because European Union ने जिस तरह से union form की, they are trying to facilitate European countries for any type of international business. So जब हम बात करते हैं trade agreements की, so you cannot deny कि जहाँ पर trade disagreements भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। सो जब हमने बात की ट्रेड एग्रीमेंट्स की तो ट्रेड डिसएग्रीमेंट्स भी हो सकते हैं और ट्रेड डिसएग्रीमेंट्स क्या हैं कि टैरिफ्स, कोटास या जॉब लॉस, जहां आपने बात की कि फॉर एग्जांपल किसी कंट्री की इंपोर्ट्स इंक्रीज हो जाती हैं ड्यू टू एनी रीजन, कोई भी वजह हो सकती है, कोई गुड कंडीशन ड्यू टू इंक्रीज इन इनकम लेवल ऑफ द कंट्री, इंक्रीज इन देयर परचेजिंग पावर, सो पीपल यू टेंड टू बाय मोर ऑफ द फॉरेन प्रोडक्ट्स और मोर ऑफ द इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स. In that case, government intervention is there. Why? Because they want to reduce the imports pressure and they want to reduce the imports in their country. Every government has the agenda that they want to increase with their exports, not with the imports. So tariffs involve किए जा सकते हैं, quotas involve किए जा सकते हैं. That can become a point of disagreement between different nations. Job loss से related we have already discussed कि अगर आप outsourcing करते हैं या फिर आप अपनी कोई for example आप कुछ इस तरह से market में penetrate करते हैं जहाँ आप cheap labor को utilize करके products generate करना चाहते हैं, in that case what will happen कि आपके जो जॉब लॉस है वो इन्वॉल्व हो जाएगा. बिकॉज अगर आप चीप मार्केट्स में जाएंगे तो वो लेबर जो आपकी कंट्री में अवेलेबल है और वो ये सेम प्रोडक्ट्स या सर्विसेज जनरेट कर सकती है, दे विल बिकम जॉबलेस एंड इन दैट केस दैट विल बिकम अ पॉइंट ऑफ डिसएग्रीमेंट. So rules are also different for different countries. We also discussed the child labor law. We also discussed the bribing conditions. That in some countries, child labor laws are really strict and they don't allow the other countries to produce their products in terms of that they don't want to utilize child labor for the production of their products. However, there are certain countries who are still using the child labor because that is very cheap and that they are cheaper than the general labor. Plus the bribe case where there are countries who are using bribery and there are some other countries who are completely against this concept. So that can also become a concept of trade disagreement in this case. Outsourcing क्या है कि say for example we took the example of America कि अगर अमेरिका ने for example कोई services utilize करनी है या services purchase करनी है, IT service की हमने बात की कि अगर उन्होंने इंडिया से IT services purchase करनी है और वो अपने call centers के लिए या अपनी for example कोई भी किसी लाइक फॉर एग्जांपल जिस तरह ब्रिटिश टेलीकॉम है वो अपने कॉल सेंटर पर इंडियंस को हायर करता है.
अब इंडियंस की जो हायरिंग हो रही है वो क्यों हो रही है? क्योंकि ब्रिटिश टेलीकॉम से रिलेटेड जितने प्रॉब्लम्स होंगे इन यूके वो डील करेंगे उन कॉल सेंटर्स के ऊपर। अगर कोई कॉल करता है कि मेरे इंटरनेट की फैसिलिटी में कोई प्रॉब्लम आ रहा है या कोई फोन लाइन में कोई प्रॉब्लम आ रहा है, ब्रॉडबैंड में कोई प्रॉब्लम आ रहा है, ओवर द फोन जो आपके बैठे हुए कॉल सेंटर में लोग वो उनको रिप्लाई कर देंगे कि दिस इज द मेथड बाय विच यू कैन बेसिकली एलिमिनेट दिस प्रॉब्लम। इन टर्म्स ऑफ आईटी सेक्टर, इंडियन इकोनॉमी इज बूमिंग अ लॉट एंड इन मोस्ट ऑफ द कॉल सेंटर्स या फिर तमाम वो इदारे जहां पर आपके आईटी सर्विसेज रिक्वायर्ड है, वेदर ऑन फोन और वेदर ऑन फिजिकल बेसिस, इंडियंस आर एक्सेलरेटिंग और बूमिंग इन दैट केस। फॉर एग्जांपल जो हम एग्जांपल कोट कर रहे थे आउटसोर्सिंग की, कि अगर अमेरिका इंडियंस को ये दे कॉन्ट्रैक्ट, या फिर अगर ब्रिटिश टेलीकॉम ये कॉन्ट्रैक्ट इंडियंस को दे दे कि आप हमारे लिए कॉल सेंटर की सर्विसेज प्रोवाइड करें, और ड्यू फॉर एनी रीजन अगर इंटरनेट में कोई प्रॉब्लम आता है या कोई टेलीफोन लाइन में कोई प्रॉब्लम आता है, सो यू शुड प्रोवाइड सर्विसेज और सोल्यूशंस बताएं। एंड फॉर दैट अमेरिकन जो है, अमेरिकन इकोनॉमी जो है वो इंडियंस को पे कर रही है, इंडियन इकोनॉमी को। This means that you are outsourcing, and due to that outsourcing there is possibility कि आपके जो employees हैं वो jobless हो जाएंगे, and in that case that can become a trade disagreement again. तो हमने जहाँ ट्रेड एग्रीमेंट्स की बात की वहाँ हमने ट्रेड डिसएग्रीमेंट्स की भी बात की। Economic factors are also very important in terms of international finance, के how economic factors can have an impact over the international trade. से for example आपके जो economic factors हैं जिसमें आपकी inflation आ जाती है, so any increase or decrease in inflation will definitely have an impact over your international trade. Plus impact of national income, कि आपकी national income में क्या impact आ सकता है, अगर increase होती है या decrease होती है उसकी वजह से आपका international trade कितना effect हो सकता है। किसी कंट्री की इंपोर्ट्स इंक्रीज हो सकती हैं या डिक्रीज हो सकती हैं ड्यू टू इंक्रीज एंड डिक्रीज इन नेशनल इनकम। वी डिस्कस दिस क्राइटेरिया इन टू मच डिटेल इन आवर प्रीवियस लेक्चर्स। गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शंस वर आल्सो डिस्कस्ड इन आवर लेक्चर्स वेयर वी सी कि गवर्नमेंट इंटरवेंशन क्या है और गवर्नमेंट की रिस्ट्रिक्शंस क्या हैं रिगार्डिंग डिफरेंट ऑप्शंस और रिगार्डिंग डिफरेंट पॉलिसीज। Foreign exchange rates cannot be denied. That is the most important topic which we have covered in terms of international finance, because जब भी आप international finance की बात करेंगे तो वहाँ international या foreign currencies involve होंगी। इन foreign currencies को जब आप convert करते हैं into another currency, that becomes your foreign exchange rates, और उसकी fluctuation जो है that can have an adverse effect over the health of the international business. सो इंटरनेशनल कैपिटल फ्लोज को हमने डिस्कस किया, इंटरनेशनल ट्रेड फ्लोज को डिस्कस कर चुके हैं, वो फैक्टर्स जो डीएफआईज को इफेक्ट करते हैं और वो फैक्टर्स जो कि आपके पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट को इफेक्ट कर सकते हैं। वी हैव डिस्कस्ड all of them in details. We have also discussed the role of those agencies who basically facilitate the international trade, which can be, for example, World Trade Organization, who is providing the facility to different nations for the facilitation of international trade. And in terms or in case of any issue in international business, this is the organization who is basically trying to deal with all types of issues coming or faced by any country. So वो try करती है ये organization to eliminate completely those issues so that the international trade can be boosted. We also discussed the motives to use the international markets, where we discussed the economic conditions, exchange rates, and international diversification. And international diversification was discussed in detail, that why international diversification is important. When you are discussing about the foreign exchange market, so we started with the concept of gold standard, कि किस तरह से gold standard start हुआ था और gold के against आपके reserves को maintain क्यों किया जाता था और किस तरह से आपकी transactions होती थी। And then we also discussed the concept of fixed exchange rate and floating exchange rate, के fixed exchange rate में आप टाई कर देते हैं अपनी करेंसी को किसी भी stronger currency के साथ। However, in terms of floating exchange rate, you just let them go on their own and you just focus on their prices or on their values, कि वो extreme bounds को touch ना करें और वो float करें in exchange rates market. Spot market, bid-ask spread, or direct and indirect quotations we have discussed in detail. What is the spot rate? That is the rate which is in existing market right now. If you want to exchange your currency in any other currency and you want to go to the market, whatever price will be quoted by the bank or by the agents, that will be your spot market rate. What is the difference between bid and ask rate? We have discussed it already. Direct quote and indirect quotation, that how you can write pounds
in terms of dollars, or how you can write dollars in terms of pounds. So that is called your direct or indirect quotation. When you have exchange rate fluctuations and exchange rate movements, so there comes the concept of hedging. You can either go for the future market concept or the forward contract market, where you can go and sign the contract in terms के आप जी फ्यूचर में या बाइंग या सेलिंग कर लेते हैं और अपनी प्राइसेस को लॉक कर देते हैं फॉर दैट पर्टिकुलर करेंसी के इन फ्यूचर, वेदर यू आर गोइंग टू बाय इट और सेल इट. बट इन टर्म्स ऑफ फ्यूचर्स एंड फॉरवर्ड वी हैड डिस्कस्ड के आपके पास अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट आ रहा है फॉरवर्ड का, सो उसमें आपका क्या होगा कि आप करेंसी की वैल्यू डिफाइन कर लेंगे कि इन फ्यूचर आई विल बाय दिस और आई विल सेल दिस करेंसी एट दिस पर्टिकुलर प्राइस, और आप उस प्राइस पे उस डेट को एक्सरसाइज करेंगे. दैट इज द ऑब्लिगेशन. यू कैन नॉट मूव बैक दैट नो आई डोंट वांट टू एक्सरसाइज इट, बट यू हैव टू डू इट. देन वी आल्सो डिस्कस द एट्रीब्यूट्स ऑफ द बैंक्स and the other concept of hedging, which is called the options. And in terms of options, we had discussed the two subcategories where you use it as a put option or कॉल ऑप्शन, कि आपके पास ये दोनों ऑप्शंस अवेलेबल्स हैं और आप उसकी बेसिस पे, इन दोनों ऑप्शंस की बेसिस पे डिसाइड कर देते हैं वेदर यू वांट टू गो फॉर हेजिंग और नॉट. ऑप्शंस में क्या है कि ऑब्लिगेशन नहीं है. व्हेन यू आर बाइंग अ पुट ऑप्शन और साइनिंग अ कॉल ऑप्शन, इट इज एन ऑप्शन. You can either exercise it or you can avoid it. So whether you want to use it or you want to avoid it, it is up to you. So options आपके basically exercise होते हैं या basically आप options को use करते हैं in a way where you are trying to find कि आपने hedge करना है या नहीं करना. By the end of the option contract, if you find it कि इस option का आपको कोई benefit नहीं है, so it is in your hand or the decision is in your hand that whether if you want to move back or roll back, you can move back. डोमेस्टिक मनी मार्केट का कॉन्सेप्ट भी हमने डिटेल में डिस्कस किया था कि आप किस तरह से डोमेस्टिक मनी मार्केट को यूज करके हेजिंग कर सकते हैं. प्लस वी आल्सो डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ द डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल मनी मार्केट्स, जिसमें आप मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में डील करते हैं वेयर द टाइम पीरियड इज शॉर्ट एंड लेस देन 1 year. Standardization of bank regulations was the main concept in this lecture, where we discussed that how the standardization of banking regulation is important and how international business can be affected अगर आपके different countries में different banking regulations follow हो रहे हैं. So अगर आपने international business launch करना है या फिर आपने international market में move करना है, in that case you must know कि अगर आपने banking regulations को follow करना है तो that must be standardized. Why? Because in that case, standardization of banking regulation is important. In that way, you can basically use the same rules in your country and in any other country, और financial crisis को avoid किया जा सकता है. For the importance of your standardization of banking regulation, we discussed the concept of Single European Act, according to which all of the European countries are moving into the same direction and they are following the same regulations. When we discussed the concept of Central Bank of Europe, in that way we discussed that it is possible that all these banks or all the banks into the Europe will have the same policy. However, we also discussed the concept of monetary and fiscal policy in terms of European concept, European Act concept, कि it is possible for the banks that they can go for the same monetary policy for each and every country who is part of European Union. But in case if you are using the fiscal policy, so it should be different for each and every country because the scenario for the consumption of their revenue would be different in terms, because हर country की अपनी एक specific requirement है या एक specific project या policies हैं in which they are trying to go for their consumption. So government is very much dependent in a way in European countries that they want to see which policies are important and they can adopt those policies. So when you are talking about the standardization of banking regulation, so in terms of policies, yes, money supply या फिर जो monetary supply की जो policy है that can be standardized in terms of your different countries. अगर आप यूरोप की example ले तो तमाम countries की जो monetary policy है that can be same. But when you are talking about the fiscal policy, it cannot be same in all the European countries.
We also discussed the concept of Basel Accord 1 and Basel Accord 2, where we discussed that there is possibility कि आप Basel Accord 1 या Basel Accord 2 के through, because ये standardized concepts हैं, ये standardized regulation है, through which the European economies are trying to get the benefits. तो जितने standardized होंगे rules, उतना ही possible होगा कि आपकी जो financial transactions हैं उनमें कोई fluctuations ना आए या कोई आपकी crisis ना आने के chances available हैं. We also discussed the concept of syndicated loans के जहाँ पे एक बैंक्स का ग्रुप या फिर डिफरेंट कंट्रीज के बैंक्स का ग्रुप बैठकर एक ग्रुप फॉर्म करता है और सिंडिकेटेड लोन्स असाइन करता है या इशू करता है. इन दैट केस बिकॉज बहुत सारे बैंक्स या बहुत सारे कंट्रीज इन्वॉल्व हैं, तो इसमें बैंक डिफॉल्ट का जो लोन्स के डिफॉल्ट का रेट है वो बहुत लो है. Because anyone who is taking the loan, they know it that there are so many other countries involved in that, और usually ये loans banks को issue किए जाते हैं if they know कि क्योंकि बहुत सारे countries involved हैं, so any case of default will lead them for the future कि उनको future में कोई loan नहीं मिलेगा, so there is less chances of default in syndicated loans. तो benefits भी बहुत ज़्यादा हैं और there are chances कि आप syndicated loans के through आप default को reduce कर सकें. We also discussed the concept of international credit market, where we discussed कि आप international level में या फिर international financial markets में credit market से किस तरह से benefit ले सकते हैं और deal कर सकते हैं. Also discussed the concept of international bond markets कि rather than investing into your domestic market bonds, you can go for the international bond markets. We also discussed the concept of international stock market, where we discussed that there is possibility when you are dealing with international stock markets, so those international stock markets will be preferred by the investors where transaction costs are low. से आपके पास फॉर एग्जाम्पल आपने ट्रांजैक्शन कॉस्ट आपके पर 1000 रुपीज़ के ऊपर 100 रुपीज़ चार्ज हो रही है. अगर आपने इंटरनेशनल स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है और 1000 रुपए के ऊपर यू हैव टू पे 100 रुपीज़ एज ट्रांजैक्शन कॉस्ट, सो ऑब्वियसली इट्स टू मच. फॉर ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन यू माइट बी चार्ज विद 100 मोर रुपीज़. सो इन दैट केस ऑब्वियसली यू वुड बी रिलेक्टेंट फॉर योर फ्यूचर ट्रांजैक्शन, बिकॉज यू नो कि आपको अगर 1000 रुपीज़ के ऊपर 100 रुपीज़ चार्ज हो रहा है ट्रांजैक्शन कॉस्ट, तो नेक्स्ट कॉस्ट जो होगी वो 900 पे फिर 100 होगी, क्योंकि 100 तो आपके 1000 से डिडक्ट हो जाएगा. तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट जितनी ज्यादा होती है इतना ही इन्वेस्टर्स रिलेक्टेड होते हैं इन्वेस्ट करने के लिए. जितनी ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम होंगी उतना इन्वेस्टर्स फेवरेबल होंगे उन स्टॉक मार्केट्स में जहां पे वो इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं. सेकेंडली वी ऑल्सो डिस्कस्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ इंफॉर्मेशन कॉस्ट कि आपकी अगर तो कुछ इस तरह की मार्केट्स हैं कि जहां पर आपने इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए भी आपको कॉस्ट पे करनी पड़ती हैं, देन ऑब्वियसली इट इज अगेन अ पॉइंट वेयर द investors doesn't want to invest, क्योंकि information cost usually due to the information technology and due to the internet facility information costs भी reduce हो रही हैं. And due to this facility not only information cost but transaction cost भी जो हैं वो reduce हो रही हैं. जिस तरह हमने डिस्कस किया था स्विट्जरलैंड की स्टॉक मार्केट को, where we discussed कि जी आपकी transaction cost या फिर आपकी information costs बिल्कुल जीरो हो जाती हैं. You don't have to physically go to the stock market, stock exchange. You just do it on the computer, and there is no physical existence of Switzerland stock market because they have developed their system over the internet facility or over the IT facility, so that you don't have to physically move on and you have to go to the stock market and do your transaction. You can do it here from your home by using the computers. Exchange rate risks was also discussed in detail when you are discussing the international stock markets. Whenever you are dealing with the international transactions, whether it is bond market, whether it is stock market, you must consider that you are exposed towards the risks, and these risks can be in terms of transaction cost, information cost, and that can be in terms of exchange rate cost also. International stock diversification क्या है कि rather than investing only in one basket, putting all the eggs in one basket, you should move on with different types of transaction, different types of investments कि आप international stock diversification कर दें. Rather than having your investment into one stock, तो अगर वो lose करता है तो आपकी सारी amounts lose हो जाती हैं. You should invest into different types of stocks, and उस different types of stocks में आप basically investments करके आप उसमें achieve कर सकते हैं diversification के benefit को.
We also discussed the concept of exchange rates, and we discussed that what is the depreciation and what is the appreciation of a currency, that currency, how it can reduce it in its value and how it can increase its value, what are the criteria, what are the forces behind the exchange rate depreciation and appreciation. Plus we also discussed the concept of exchange rate equilibrium, कि अगर कोई exchange rate है उसकी demand and forces, supply की forces के against equilibrium point आप किस तरह से define कर सकते हैं, and how much equilibrium point is important for any company or any country. We also discussed the concept of liquidity, which is quite important, that where we discussed कि आपकी जितने वो currencies जो कि liquid हैं जल्दी transform हो जाती हैं into other currency, they are highly preferred currencies and they don't have any fluctuation या volatility उनमें ज़्यादा नहीं है. And we also discussed the factors that can affect the exchange rates. When we are discussing the international business, then you cannot ignore the concepts of relative interest rate and relative income level. जब आप बात करते हैं relative interest rate की, so these are the interest rates which are important in a way कि आप उनको किस तरह से basically उनको compare कर सकते हैं into different economies. आपकी relative interest rates क्या होंगे कि आपके जो competitors हैं या आपके जो दूसरे countries हैं उनमें relative interest rates क्या हैं, and how much they are offering on borrowing and how much they are offering on lending. So they do have an impact over international business definitely. Relative income level क्या है किसी country का, वो कितना impact लेके आ सकता है over the international business, that was also a point of discussion in our previous lectures. Expectations, they do have an impact over international business, and that was also an important discussion. Speculating on anticipated exchange rate, that how speculation can take place in international business. We also discussed when you are talking about different types of exchange rate regimes कि आपके पास जब आप बात करें international business की तो कितने type के international business से related foreign exchange regimes available हैं. First thing we discussed the fixed exchange rate, where we were trying to clarify the concept कि fixed exchange rate में basically you are trying to peg your currency या tie your currency straight away with the other strong currency, आप tie कर देते हैं और उसमें मूवमेंट का चांस नहीं आप छोड़ते या फिर बहुत कम मूवमेंट अलाउड होती है. फ्रीली फ्लोटिंग इज द कॉन्सेप्ट वेयर वी डिस्कस्ड कि आप अपने एक्सचेंज रेट्स को फ्रीली मूव करने देते हैं या फ्रीली फ्लोट करने देते हैं और उसको यू जस्ट लीव देम विद द मार्केट फोर्सेस के जितनी डिमांड है या जितनी सप्लाई है उस करेंसी की उतनी ही इसकी वैल्यू इनहैंस या डेप्रिशिएट या अप्रिशिएट हो सकती है. Managed float क्या है, that when we are considering the freely floating market, so none of the government favors in freely floating market. Why? Because they consider कि freely floating market जो है उसमें currencies को आप छोड़ रहे हैं उनके अपने behalf पे कि वो खुद ही identify कर लें कि उनकी value कितनी होनी चाहिए on the basis of demand and supply. However, in freely floating market, basically the main point of view is that when you are considering freely floating market, demand of the currency will basically enhance or appreciate the price, or supply of the currency will basically depreciate the value. So अगर freely floating के ऊपर आप छोड़ दें अपनी currencies को, so in terms of government it is not possible कि आप अपनी currency को just leave them alone on their own market forces कि वो खुद ही से अपनी price या अपनी value define कर लें. It is not in the interest of the government, so government usually intervene and they introduce the managed floating exchange rate. What are managed floating exchange rates? कि इस floating exchange rate में आप basically मैनेज करते हैं एक्सचेंज रेट्स को, एक ब्रैकेट डिफाइन कर देते हैं जिसके बीच में आप अपने एक्सचेंज रेट्स को फ्रीली मूव करने देते हैं अकॉर्डिंग टू द डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस, एंड देन यू डोंट लेट देम टू टच द एक्सट्रीम पॉइंट्स एंड यू डोंट लेट देम टू मूव बियॉन्ड द एक्सट्रीम वैल्यूज. We also discussed the concept of currency boards, and we, in case of crisis, where we discussed the Argentinian crisis, in case of Argentinian economy, what was the role of currency boards and how did they manage to basically come out of the financial crisis. डॉलराइजेशन से रिलेटेड भी हमने कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया दैट व्हाट इज डॉलराइजेशन. डॉलराइजेशन इज अ कॉन्सेप्ट वेयर यू से दैट द कंट्रीज जस्ट लीव देयर ओन करेंसी एंड दे स्टार्ट यूजिंग द डॉलर्स एज देयर मेन करेंसी ऑफ और द मोड ऑफ एक्सचेंज. सो इन टर्म्स ऑफ डॉलराइजेशन वी कंसिडर द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्वाडोर और द कंट्री एक्वाडोर वेयर देयर ओन करेंसी वाज depreciated to that extent that they cannot move on with their same currency.
So they have to basically introduce something new where they considered the concept of dollarization, and also Qatar and Ecuador. These are the countries who are using dollars instead of their own home currencies. So dollarization is also in international finance. And we also considered the concept of single European currencies, where we discussed the concept of euro and the importance of euro, and by how much degree or how euro can basically facilitate international business. That was also our discussion in our previous lectures. इम्पैक्ट ऑफ मॉनेटरी एंड फिजिकल सप्लाई, एज वी सेड कि जब आप यूरोपियन करेंसी की बात करते हैं, जब आपके पास सेम करेंसी है तो आप मॉनेटरी पॉलिसी को तो सेम रख सकते हैं, बिकॉज दैट इज मोर टुवर्ड्स द सप्लाई ऑफ मनी. बट इन अदर वे, इफ यू आर कंसिडरिंग द फिजिकल पॉलिसी, सो दैट डील्स विद द योर रेवेन्यूज एंड विद योर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स. सो इट इज नॉट पॉसिबल टू हैव द सेम फिजिकल पॉलिसी फॉर ऑल द यूरोपियन कंट्रीज. दे शुड मूव ऑन विद द डिफरेंट फिजिकल पॉलिसीज, बिकॉज हर कंट्री का डिफरेंट एजेंडा है रिगार्डिंग देयर रेवेन्यूज, एंड हर कंट्री की डिफरेंट कॉस्ट्स हैं. सो व्हाट दे नीड टू डू इज दे नीड टू सी, हर कंट्री को देखना है कि उनकी टैक्सेस किस तरह से कलेक्ट हो रहे हैं और उसको फर्दर उन्होंने कहाँ इन्वेस्ट या फिर किस तरह से उसको वेलफेयर के लिए यूज करना है. In case of single European currency, monetary policy can be standardized, but fiscal policy cannot be standardized. International trade and international flows were also point of discussion in our previous lecture, and we also discussed the impact of exchange rate risk and government intervention in terms of your international business. The concept of reliance on reserve was also very important, because then you know कि आप किस तरह से prices को control कर सकते हैं. So the reliance of reserve is also very much important in terms of international business, because then you can control the prices, as we discussed the example of dollars, कि आप किस तरह से उसकी supply increase या किस तरह से उसकी demand increase करके prices को control कर सकते हैं, या currency की value को appreciate या depreciate कर सकते हैं for your own benefit. We also discussed the role of a direct intervention of the government by using the sterilized and non-sterilized way. By using the sterilized way, the government can intervene into the foreign exchange market by using the money market instrument or money supply instruments. However, when you are talking about the non-sterilized market intervention, direct intervention by the government, so that is the intervention which is done straight away into the market without using any instrument from the money supply. Indirect intervention is also available in terms of international business, because government have to intervene into the foreign exchange market, because it does not, as we have discussed already, कि freely floating exchange rate नहीं छोड़ सकती government. So in that case, what governments are doing are that they can either go for the direct intervention or they can go for the indirect intervention. So आप या तो आप direct intervention कर लें through sterilized and non-sterilized way, या फिर आप indirect intervention कर लें through इकोनॉमिक फैक्टर्स या इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट्स के थ्रू, या इनकम लेवल्स के थ्रू, या गवर्नमेंट कंट्रोल्स के थ्रू, या एक्सपेक्टेशन चेंज होने के थ्रू. सो दैट इज कॉल्ड द इनडायरेक्ट इंटरवेंशन. बट दीज ऑल बोथ आर वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर इंटरनेशनल बिजनेस, बिकॉज by using these intervention from the government, the exchange rate can remain into the boundaries. Then we discussed the concept of arbitrage, where we said कि अगर आपकी जो quotations हैं, exchange rates हैं, वो different हैं from one bank to the other bank, या from one country to the other country, या one location to the other location, then there is a possibility कि आपके पास arbitrage opportunities available हैं. And those banks who basically focus on these criteria कि arbitrage opportunities हों, so there are 3 possible arbitrage opportunities available. One is called locational arbitrage, कि किसी एक location पे आपके जो कोटेशंस हैं वो डिफरेंट हैं किसी दूसरी लोकेशन से. सो इन दैट केस यू आर ट्राइंग टू सी कि आपकी लोकेशनल आर्बिट्राज की फैसिलिटी अवेलेबल है या नहीं. इफ यू बीइंग एन आर्बिट्राज कंसिडर कि जी आपके आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है, देन व्हाट यू कैन डू इज यू कैन बाय फ्रॉम वन प्लेस एंड सेल इट टू द अदर प्लेस. इफ यू कंसिडर इट फ्रॉम द बैंक्स पॉइंट ऑफ व्यू, तो अगर किसी एक बैंक की बिड प्राइस दूसरे बैंक की आस्क प्राइस से डिफरेंट है, देन देयर इज द अपॉर्चुनिटी कि आप वहां पे आर्बिट्राज कर सकें, एक बैंक से बाय करके दूसरे
दूसरे बैंक में सेल कर दें और आर्बिट्राज प्रॉफिट्स जनरेट कर लें. वी ऑल्सो डिस्कस द कॉन्सेप्ट के व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटीज, सो इट इज पॉसिबल दैट यू आर नॉट जनरेटिंग ह्यूज प्रॉफिट्स. व्हाई? बिकॉज आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटीज बहुत माइनर अमाउंट्स में होती हैं. सिंस ड्यू टू द इंट्रोडक्शन ऑफ द इंटरनेट फैसिलिटी इट इज नॉट पॉसिबल कि आप ह्यूज अमाउंट्स में आर्बिट्राज गेन कर सकें, बट स्मॉल अमाउंट्स में ये आप गेन कर रहे हैं. बट अगेन ऑन द अदर साइड वी सेड since you are not involving your huge amount for long period of time, plus you are not physically involved in this activity, you're just sitting on your computer, you are buying from one place, selling it to the other place, and you are generating your profits whether on computer or whether on your telephone. Triangular arbitrage was also considered, where we said that there is a possibility that triangular arbitrage will take place if there are three different types of currencies involved. So for example, we took the example of America कि अगर आप अमेरिका में डॉलर्स की बात कर रहे हैं और आपकी ट्रांजैक्शन किसी दूसरी करेंसीज में हो रही है और उन दोनों के दरमियान कोई ऐसा डिफरेंस आ रहा है इन प्राइस कोटेशन that you can basically move on with that and you can generate your arbitrage opportunity. So yes, you can go with the triangular arbitrage. Finally, we discussed the concept of covered interest arbitrage, where we say, as the name suggests, कि covered भी है और interest भी है और arbitrage opportunity available है. किसी दो countries के interest rate में अगर difference है and you are trying to take the benefit out of it, that is called your covered interest arbitrage. ये तो interest arbitrage है. cover किस तरह से होगा? that you are trying to cover it by using the hedging technique. कि एक तो आपने इंटरेस्ट रेट का डिफरेंशियल निकाल लिया और उस डिफरेंशियल की बेस पे आप प्रॉफिट ले रहे हैं. फॉर एग्जांपल, आप बोरो कर रहे हैं अपने कंट्री से, इन्वेस्ट कर रहे हैं फॉरेन कंट्री में, बिकॉज देयर इज डिफरेंस इन योर कंट्री एंड दी अदर कंट्रीज इंटरेस्ट रेट्स. अब उस इंटरेस्ट रेट से जो आपको बेनिफिट हो रहा है वो तो आपको फॉरेन करेंसी में हो रहा है, उसको वापस आपने लेके आना है इन योर होम कंट्री. जब आपका टाइम या आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है मेच्योर होना है इन योर फॉरेन इन्वेस्टमेंट, वापस उसको जब आप कन्वर्ट करेंगे इन योर होम करेंसी, देयर इज पॉसिबिलिटी एक्सचेंज रेट चेंज हो चुका हो और आपको कोई बेनिफिट ही ना हो इस ट्रांजैक्शन से. सो उसको कवर करने के लिए कवर्ड इंटरेस्ट आर्बिट्राज की अपॉर्चुनिटी अवेलेबल हो सकती है. एंड यू हैव टू सी वेदर यू कैन अवेल इट और नॉट. कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कन्वर्ट योर करेंसी इनटू फॉरेन करेंसी, then you can invest it into other country, then you have to return it back to your country. और दूसरे केस में इसकी दूसरा ऑप्शंस भी अवेलेबल थे, जिस तरह से हमने किया था कि दूसरे कंट्री से आप बोरो करें, अपने कंट्री में इन्वेस्ट करें और वापस उनको रिटर्न कर दें. बट फॉर बोथ केसेस यू हैव टू सी कि इंटरेस्ट तो डिफरेंशिएट हो रहा है, डिफरेंशियल आ रहा है, बट वेदर इट इज पॉसिबल दैट यू कैन कवर इट थ्रू हेजिंग और नॉट. We also discussed the concept of interest rate parity, transaction cost, political risks that can be involved in international business, and we also considered the differential tax laws के different countries में taxes different होते हैं और उसी वजह से आप उनको differently आप exposed हैं towards the different types of risks. Multinational company need to know about the exchange rate forecasts also, और हमने forecasts की different techniques भी पढ़ी थी और different methods भी पढ़े थे. Hedging decisions के ऊपर भी multinational ने focus करना है. Short term financing decisions are important for multinational companies कि किस तरह से funds raise किए जा सकते हैं. Short term investment decisions are also important कि आप किस तरह से investments कर सकते हैं. Capital budgeting decision is also very much important, and earning assessments are a key point of concerns for the multinational companies. Now when you talk about the long-term financing decisions, so we discussed the forecasting techniques which involved the technical forecasting, the fundamental forecasting, and market-based forecasting. What is technical forecasting? In technical forecasting you are basically trying to see कि आपके past trend या historical trends क्या हैं. time series data के ऊपर आप ये forecasting करते हैं. technical forecasting क्या आ रही है कि आपके past trend में या previous जो आपके historic prices हैं वो क्या चल रही हैं. On the other hand, you can also see the fundamental forecasting, which is basically where you are trying to see the economic factors involved in it. कि economic factors के through आप देख लेते हैं कि next future में आपकी forecasting किस तरह से होगी. मार्केट बेस में आप स्पॉट रेट्स और फॉरवर्ड रेट्स को देख के फोरकास्टिंग कर लेते हैं और डिसाइड कर लेते हैं कि आपकी फ्यूचर में कितनी प्रेडिक्शंस पॉसिबल हैं. ऑल्दो यू कैन यूज ईदर वन टेक्निक और यू कैन गो फॉर ऑल ऑफ देम और यू कैन मेक अ मिक्स ऑफ इट. सो द फाइनल कैटेगरी इज द मिक्स्ड मेथड बाय विच यू कैन सी कि आप फोरकास्टिंग एक वे से करेंगे या दो या तीन को मर्ज भी किया जा सकता है.
When we discuss the forecasting techniques, so there is a possibility that when you are doing your forecasting, so you should face the forecasting errors, and forecasting services are also available in that way कि forecasting errors तो हो ही सकते हैं, but on the other side, since the forecasting is getting very famous now in international finance, so different banks and different agencies are offering forecasting services for the different multinational companies. Diversification argument was also discussed in detail, and then we discussed in detail the three different types of exposure. First one is your transaction exposure, second one is your translation exposure, and third one is your economic exposure. Once you have identified कि आपकी degree of transaction exposure या degree of translation exposure या degree of economic exposure क्या है, आपकी कंपनी कितना transaction exposure face कर सकती है या कर रही है, या फिर कितना translation exposure face कर सकती है, या कितना आपकी कंपनी economic exposure face कर सकती है. In that case basically now you have to decide कि आप इसको hedge कर सकते हैं या नहीं. After getting the decision that yes you want to go for the hedging, the third decision would be that by which mean you can or by which method you can hedge. So we discussed in detail the transaction exposure, the economic exposure and the translation exposure. Now what was the transaction exposure? कि आप जब ये देखते हैं कि किसी एक फर्म के या किसी मल्टीनेशनल के कैश इनफ्लोज या आउटफ्लोज पर कितना इम्पैक्ट आता है ड्यू टू एक्सचेंज रेट मूवमेंट, दैट इज कॉल्ड योर ट्रांजैक्शन एक्सपोजर. हाउएवर व्हेन यू वांट टू सी कि किसी कंपनी के ट्रांजैक्शन एक्सपोजर इकोनॉमिक एक्सपोजर क्या है, तो उसमें आप बेसिकली यू आर ट्राइंग टू सी दी present value of the future cash flow that can be affected due to the exchange rate movement. So that is called your economic exposure. But again, all these exposures are dealing with the exchange rate movements. So the third one is called your translation exposure, जिसमें हमने बात की थी कि एक पेरेंट कंपनी है और उसके अंडर आपके 4 या 5 फॉर एग्जांपल सब्सिडरीज काम कर रही हैं इन डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट कंपनीज काम कर रही हैं. आपकी जो पेमेंट्स ट्रांसफर होनी है इन पेरेंट कंपनी, वो आप किस तरह से करेंगे? इन दी लोकल करेंसी ऑफ द पेरेंट कंपनी. तो उन तमाम की तमाम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कंसोलिडेट होना है इनटू पेरेंट कंपनीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और उन तमाम 4 या 5 कंट्रीज जिनकी करेंसी कुछ डिफरेंट है फ्रॉम योर पेरेंट कंपनी, सो यू हैव टू ट्रांसलेट देम इनटू द पेरेंट कंपनीज करेंसी. तो जो कंसोलिडेट होके एक फाइनल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन या फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगी, उसमें आप बेसिकली तमाम करेंसीज को कन्वर्ट कर देंगे इनटू वन मेन करेंसी. At that point, if you feel that these transactions or translation is facing some type of risk, that is called your translation exposure. तो हमने जहाँ बात की कि you can identify the factors by which or identify the degree by which you can see that how much transaction or how much economic or translation exposure is available or is your multinational company is facing. Then you have to decide whether you want to hedge it or not. Once the decision has been taken that yes you want to hedge it, then you can move on towards the concept of that what type of hedging you will use for your exposure. If it is transaction exposure, then there are lots and lots of hedging techniques or hedging methods are available. For example, future hedging, for example forward hedging, you can do the options hedging, you can do the money market hedging. Currency swaps were discussed. We also discussed the parallel loan. So we also discussed the concept of currency swaps in a way where we wanted to hedge against the transaction exposure. When we discussed the economic exposure, so we discussed the concept of restructuring in terms of hedging कि आप restructure कर दें अपने पूरे framework को या पूरे setup को, और आप उसको restructure कर दें अपने operations को, और अपने operations को किसी दूसरी location पर launch कर दें. Again there were two concepts. One, it is expensive. Second, it is time consuming. Finally, we discussed the concept of direct foreign investment and the motives behind the direct foreign investment involved, your revenues and your cost, that you want to achieve higher revenues and you want to have lower costs. So you can have more and more revenues in terms that you want to get more revenues with lower costs. So that can be done through direct foreign investment कि या तो आप acquisition कर लें in any other country, या फिर आप एक नया foreign subsidiary launch कर दें in foreign country. अब अगर आप subsidiary launch करेंगे so जो आपके revenue related motives हो सकते हैं उसमें क्या है that you want to increase your revenue by introducing new demand market, कि आप नई demand market introduce करा के आप further revenues generate करना चाह रहे हैं. Secondly, the objective can be attained by using
using the monopolistic competition या monopolistic advantage आपके product को हासिल है, and you can utilize that कि आप product को launch करें into foreign market because it is the monopolistic advantage with you. So obviously your firm would be the one who is producing this product. Either there is no competitor available into the market, or there are very few competitors available in the market. So there were different categories by which we discussed. To reduce the cost, we discussed that by using the economies of scale, by using the factors of production of any other country, by using the technology of any other country, you can go for the reduction in cost. So by using all these motives, you can basically increase your revenues and you can decrease your costs. We also discussed that there can be some types of issues related with the direct foreign investment. For example, किसी country की जो governments हैं वो इतना आपको facilitate नहीं कर रही in these criterias or in these DFIs. So we also discussed different types of issues that you can see or you can face. So that was the whole concept of international finance which we have discussed till now. I hope you have enjoyed this course, and I guess you will get good marks in this modules. So thank you so much for coming with me all along with this course, and Allah Hafiz.